हे यू लॉस्ट इन हेवन हेयर। वैसे तो मुझसे काफ़ी सारे लोग सवाल पूछते हैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में, यूजुअली अबाउट स्टडी और इफ़ दे वांट टू फाइंड अ जॉब इन स्विट्ज़रलैंड। ये सवाल यूजुअली काफ़ी जनरल रहते हैं, तो मेरा जवाब भी काफ़ी जनरल ही रहता है। लेकिन कुछ दिनों पहले एक ईमेल में मुझे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछे गए और मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये सारे सवालों के जवाब क्या पता आप भी ढूंढ रहे हैं इफ़ यू आर ट्राइंग टू कम टू स्विट्ज़रलैंड एज अ स्टूडेंट। तो शुरुआत करते हैं सीधे इन क्वेश्चन से। तो ये जिसने मुझे ये ईमेल लिखा है वो मेरे ख्याल से बर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट बनने की एक बैचलर्स डिग्री के लिए। और उनका पहला सवाल ये था कि विल ए 1 year बैचलर्स डिग्री फ्रॉम इंडिया बी इनफ टू गेट एन एडमिशन इनटू अ स्विस यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि मैंने मेरी काफ़ी वीडियोस में कहा है, स्विस एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। इफ़ यू जस्ट फिनिश योर स्कूल यू कैन नॉट कम टू स्विट्ज़रलैंड एंड गो स्ट्रेट टू बैचलर्स, क्योंकि यहाँ पे 13 साल की एजुकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड है बैचलर्स के लिए। लेकिन क्योंकि इंडिया में सिर्फ 12 साल की स्कूलिंग होती है, देयरफॉर विद स्विट्ज़रलैंड इट डज नॉट मैच एंड देयरफॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू स्विट्ज़रलैंड आर कमिंग हियर फॉर मास्टर्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बैचलर्स। सो अगर आपने सिर्फ एक ही साल बैचलर्स करी है तो दैट इज़ नॉट ऑल्सो डज नॉट वर्क। जर्मनी में भी सेम है, लेकिन जर्मनी में वहाँ पे एक तरीके का स्पेशल कोर्स होता है जिसको आप करके यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कोर्स स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। तो मेरा जवाब ये था कि यूजुअली अगर आप अप्लाइड साइंसेज ऑफ यूनिवर्सिटीज़, जो कि स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो बैचलर्स में शायद डायरेक्टली ना हो पाए, और उसके अलावा अगर आपको बैचलर्स में एडमिशन चाहिए तो आपको मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी लगेगा। ओके, तो दूसरा सवाल था कि आफ्टर कंप्लीटिंग a bachelor's degree in Switzerland, is it difficult for non-EU students to start a business? Partnership with a Swiss citizen, does the university support student entrepreneurship? बिजनेस आप यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में एज ए नॉन यू नहीं स्टार्ट कर सकते, एंड स्पेशली एज ए स्टूडेंट। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर स्विट्ज़रलैंड में आपको अपना खुद का बिजनेस करना है तो यू नीड ए स्विस सिटीज़न हु नीड टू हैव ए मिनिमम 51% ऑफ ओनरशिप, और 49% एज ए ओनर आप काम कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस खोलने का ये मतलब नहीं है कि आपको यहाँ पर रेजिडेंस मिल जाएगी। सो बिजनेस ऑफ कोर्स यू कैन रन विद योर पार्टनर, हाउएवर दैट डज नॉट अलाउ यू टू कम एंड लिव इन स्विट्ज़रलैंड। तो रेजिडेंस और बिजनेस का सबसे पहले तो एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा सवाल था, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस व्हाट इज़ द बेस्ट पैथ I should follow to start a business after a bachelor's degree in Europe? Well, basically अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले या तो आपके पास स्विस सिटीजनशिप होनी चाहिए या तो EU सिटीजनशिप, जिसके बेसिस पे यू कैन स्टे हेयर एंड देन डू योर ओन बिजनेस। उसके अलावा अगर आप नॉन EU हैं और आपके पास यहाँ की रेजिडेंसी नहीं है, स्टार्टिंग अ बिजनेस डज नॉट मेक सेंस हेयर। ऑलराइट, तो इसके बाद सवाल है थोड़ा स्पेसिफिक टू बर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। इनका सवाल था कि जो कोर्स बर्न यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में है वो कोर्स प्रैक्टिकल और करियर फोकस्ड है या फिर मोस्टली थ्योरेटिकल है। यूजुअल यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी थ्योरेटिकल पढ़ाई की जाती है। अगर आप अप्लाइड साइंसेज में नहीं जा रहे हैं और आप नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं तो बेसिकली 6 महीने आप पढ़ाई करते हैं और 6 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है एंड दैट्स इट। इन अप्लाइड साइंसेज दो यू हैव लॉट्स ऑफ ग्रुप वर्क, लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट थिंग्स दैट यू नीड टू गो थ्रू, सो आप काफ़ी बिजी रहते हैं पूरे 6 महीने। सो पहले 3 से 4 महीने तो आई वाज जस्ट डूइंग दिस प्रोजेक्ट वर्क, यू नो, डिफरेंट things here and there, and the rest of the 2 months is just you're preparing for your exams. So applied sciences usually takes more from you compared to the traditional universities. उसके बाद सवाल है कि were the classes and exams manageable? Were they more focused on real life business cases or were there a lot of theory and academic research? Well, I would not say that they are very much focused on real life business, but lots of case studies are there in applied sciences, so that's what makes it different than a traditional university, क्योंकि आप काफ़ी सारी केस स्टडीज़ में काम करते हैं, काफ़ी सारे लोग आपकी टीम डिफरेंट टीम्स में काम करते हैं। So I think in terms of working together as a team, or you need to really depend on other people to complete a project, in that case I think you really learn a lot and you are also very busy because you keep on preparing things to meet, to do things together, and then you also rely on other people to finish your project. Because of that I think it's a little bit different. उसके अलावा अगर मैं एग्ज़ाम्स और क्लासेस मैनेजेबल की बात करूँ तो मोस्टली येस, बिकॉज हम यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं तो यूजुअली यू कैन मैनेज इट। ऑल्सो विद द पार्ट टाइम वर्क you can usually manage it. It can be a bit tricky, but I think if you're working only part-time jobs, it should be fine.
उसके बाद सवाल है, डिड द यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री विजिट्स, रियल बिजनेस प्रोजेक्ट्स और नेटवर्किंग इवेंट्स? वेल यूजुअली जब मैं पढ़ रहा था इस यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैंने पहले 3 साल तो कुछ नहीं था। नेटवर्किंग यूजुअली स्विट्ज़रलैंड में आप खुद से कर सकते हैं, और यू कैन डू इट बाय लिंक्डइन, और देयर आर लॉट्स ऑफ नेटवर्क इवेंट्स गोइंग ऑन, यू कैन गो देयर बाय योरसेल्फ रजिस्टरिंग फॉर फ्री। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू यूजुअली मेरे टाइम पे नहीं होता था, अब कह नहीं सकता अब होता है कि नहीं, बट यूजुअली देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ इवेंट्स व्हिच यू कैन जस्ट गो बाय योरसेल्फ। उसके बाद क्वेश्चन था, ड्रॉप आउट रेट कैसा है? डिड मेनी स्टूडेंट लीव बिफोर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम? वेल, ड्रॉप आउट रेट इज़ क्वाइट हाई फॉर लोकल स्टूडेंट्स, नॉट रियली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट इतना सारा अपना पैसा, अपना वक्त बर्बाद करके यहाँ पे आते हैं, तो यूजुअली वो इतनी जल्दी हार मान के वापस घर नहीं जाते। बट फॉर लोकल्स इट्स क्वाइट अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। So usually university in Switzerland first year dropout rate is quite high, but that is mostly for local students because they have a lot of other options that they can go after. How many students in your class were international and how many were Swiss and how many were from India? तो ये एक सवाल था मेरे टाइम पे, जब जिस कोर्स में मैंने एडमिशन लिया था, वो कोर्स सबसे पहली बार इस यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था, इसलिए वहाँ पे इतने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं थे, एटलीस्ट इन फर्स्ट ईयर। आई वाज द ओनली इंडियन स्टूडेंट, आई थिंक pretty much the entire 3-4 years when I graduated. However, there are some other international students as well, so there were now I think it must have changed because now more and more people know about it, and it's been a while since that course is going through, and especially the international courses which are in English. तो हो सकता है कि काफ़ी सारे international students हों। अब इंडिया से कितने सारे लोग आते हैं ये मैं कह नहीं सकता, but you can expect a bit here and there, a little bit more. There is also exchange semesters which allow universities to send their students to Switzerland and vice versa. तो मेरे टाइम पे काफ़ी exchange semester में काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स भी इधर आए थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से फॉर 6 months. उसके बाद है, हाउ मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गॉट अ जॉब ऑफर आफ्टर ग्रेजुएशन एंड हाउ मेनी कुडंट फाइंड वर्क? डिफिकल्ट टू से। मेरे बैच में मैं कहूँगा आई थिंक आई वॉज द ओनली वन दैट वॉज एबल टू गेट समथिंग, और मोस्टली एवरी वन लेफ्ट, the one who could not find a job. Also lots of people or lots of students who were international, they had girlfriends or they had wives or husbands, so they stayed based on that because they married. But usually I don't remember anyone who stayed. Pretty much everyone left. फिर आती है बात सैलरी की. What is the average starting salary for an international student after completing the degree? Well, usually अगर आपके पास bachelor's degree है तो on average you can expect starting salary of 70 to 80,000 Swiss francs per year. मेरी usually international internship की salary is less, which I had 3,000 Swiss franc as an intern, which I got as my first job. And after that, my first salary then as a proper, where they hired me, was like around 80,000 Swiss francs. In Zurich area, it might be a bit higher, but then in Zurich, expenses are also quite high. But 80,000 I would say. उसके बाद, how many non-European students receive the 6-month post-study visa? Well, everyone, अगर आप यहाँ यूरोप से नहीं हैं और यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहे हैं और स्विस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं, आई नीड टू रियली पुट द एफर्ट ऑन स्विस यूनिवर्सिटी, बिकॉज नॉट एवरी यूनिवर्सिटी इन स्विट्जरलैंड आर स्विस और स्विस पब्लिक यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये वीज़ा लागू नहीं होता, तो मेक श्योर दैट द यूनिवर्सिटी दैट यू आर अप्लाइंग फॉर is a Swiss public university. On that basis, then after you graduate, you can get a 6-month post-study visa which allows you to search a job in Switzerland. उसके बाद था question, how are the student services at these universities? Were they helpful and supportive for international student in things like housing, visa and job search? Honestly, if it is a public university, they are not going to do anything for you. Private university काफ़ी करती हैं because of course you're paying them so much money, so they help you with that. But for public universities, they do not. They will send you information which might be a checklist. लेकिन when it comes to getting a visa, getting a house, getting an apartment or whatever, a place to live, then you need to do everything by yourself. And usually saying, अगर आप बड़े शहर में आ रहे हैं जैसे कि ज़्यूरिख या फिर जेनीवा या फिर बाज़ल, usually इन शहरों में it is very difficult to find something before you
or even here in Switzerland, because यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, so इतनी आसानी नहीं रहती कोई रूम मिलना या फिर कोई अपार्टमेंट मिलना. But in small places, for example in Bern, or like if it's not a big city, then usually you would be able to get something. और काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, but usually it is easier once you're here. But you can't rely really on a public university. You need to do everything by yourself. उसके बाद है इंटर्नशिप पे क्वेश्चन. आर इंटर्नशिप फॉर्मली इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम? डज BFH हेल्प कनेक्ट स्टूडेंट विद कंपनीज फॉर इंटर्नशिप? वेल, इंटर्नशिप यूजुअली अगर आप बैचलर्स कोर्स करे आ रहे हैं किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं रहती. यूजुअली इट्स जस्ट यू नीड टू गो टू द क्लास फॉर 3 or 4 years. कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इंटर्नशिप इंक्लूडेड रहती हैं, स्पेशली फॉर होटल मैनेजमेंट, बट देन दीज इंटर्नशिप यू आर रियली जस्ट वर्किंग 6 months समवेयर. आई डाउट यू लर्न समथिंग दैट मच, स्पेशली फॉर स्कूल्स विच आर देयर जस्ट फॉर मनी. बड़े स्कूलों की बात डिफरेंट है, लाइक एकोल दे होटेलियर और सम बिग प्राइवेट, बट देन यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू गो देयर. आई डोंट नो देन इफ इट इज़ जस्ट अ हॉबी फॉर यू. लेकिन उसके अलावा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंटर्नशिप यूजुअली इंक्लूडेड नहीं रहती है. अगर इंक्लूडेड रहती हैं किसी कोर्स में, देन ऑफ कोर्स 6 months you will get a visa to work, but it is rare that I have never heard any course offering such possibility of doing a fixed 6 months internship. अगर मैं बात करूं कि यूनिवर्सिटीज़ हेल्प करती हैं, yes, यूजुअली कुछ नेटवर्किंग के वेबसाइट में या फिर जस्ट बाय बीइंग इन द यूनिवर्सिटी यू जस्ट विल कनेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स. इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स, द ओनली इवेंट दैट आई रिमेंबर वाज एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर व्हेन people graduated, and then there was some event. I did not went on it, but because I found my job by online. उसके बाद है पैसों की बात. 30 to 35 lakh, would it be enough to survive and complete a 3-year program, assuming the student work part-time during semester? I don't know how much is 35 lakhs. It's been a while since I stopped converting money in my brain. However, I would say first year आपको 21,000 Swiss francs दिखाने रहते हैं, उसके ही basis पे आपको visa मिलेगा. So you need that money at least starting, and nowadays I think you need to also put it in a block account for first year, but that is only for first year. After first year, once you are here, you are able to work 6 months, which would be your part-time job. तो 6 महीने एक part-time job में, which is around 15 hours per week. I was able to manage it easily by myself, but of course it won't be a nice life. It would be a student life, but it's totally fine because you're young, so you can really support yourself. And then from next year onwards, you do not really have to show 21,000 Swiss francs. Your part-time job contract would be enough for you to get a permit for next year, and usually for your 3-4 years you can really rely on your part-time job. So yeah, any small job would be enough for you to get at least something. Okay, इसके बारे में बात आती है. Personally, do you recommend BFH, which is Bern University of Applied Sciences, or Zurich? Do they offer a better career exposure and industry connection? Honestly, Switzerland में अगर आप पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, and if you really want to live here and able to get a job, honestly the only university would be, I forgot the full form of ETH Zurich, जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गालन जो कि बिजनेस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी हैं. उसके अलावा I found it very difficult to really recommend you to study in Switzerland, because अगर आप सिर्फ पढ़ने आ रहे हैं and you're going to go back, then it's fine. Then any public university would be a good education. You learn pretty well, and then you will have a Swiss education. But to find a job, it's very difficult, especially in today's time when getting a job is not that easy. उसके बाद है, is the city of Bern a good place for Indian student in terms of student life, internship, part-time work, or Zurich is a better option? Well, Zurich is a city, is a bigger city. Zurich में काफ़ी सारी international companies हैं, but that also makes it way more competitive for you. काफ़ी सारे और भी ज़्यादा लोग हैं, and it's very international, so maybe you can also survive just with English, so you never have to really learn German, but that is a disadvantage. उसके अलावा Zurich में of course accommodation मिलना थोड़ा मुश्किल है, और it can be very expensive when it comes to food or living expenses, so that you need to keep in mind. I did most of
my studies in Bern, which is a way smaller city. वहाँ पे आप दोस्त आसानी से बना सकते हैं. Well, in the university, either ways, if you're young, it's a different thing all in all. उसके अलावा accommodation and living expenses थोड़े कम हैं compared to Zurich. लेकिन of course वहाँ पे कोई international companies नहीं है. But that will really help you to integrate. A lot of questions. I'm sorry, I'm almost at the end of it. So then the question is about weather. How is the weather in Bern? Is it very harsh like in Scandinavian countries, or is it manageable for someone from India? Well, usually Switzerland में शायद आपने सुना होगा कि it can be very cold, especially when you look at pictures, you know, like these mountains with lots of snow, etc. But in cities, usually it never gets too cold compared to Scandinavia or places like Canada or US. यहाँ पे at least since last 10 years जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 0 degrees से कम temperature ज़्यादातर जाता नहीं है. Winters are also very mild, you know, so once you will feel a bit different, but after a while, after let's say 1-2 months, you will really get accustomed to the weather. And as I said, it's not that crazy as in Canada, so it's not like -30, -40 degrees. Here it's very easy and it's very relaxed. At least the winter and the summer are getting hotter with time, but it's, yeah, summer is summer. उसके बाद, do business graduates have enough job opportunities in Switzerland, or is the market highly competitive for international students? Well, business graduate, there is no market for you as a non-EU citizen, honestly. क्योंकि इतने सारे लोग हैं, you come at the end of the list. As I said, company usually hire the local people, and then afterwards the EU citizens, because it is easier to hire them, and also because they speak the local language, and they usually have quite a lot of experience compared to you. You won't believe it, but India is a very theoretical country, at least when it comes to education, compared to Europe, where they really focus on practical knowledge. तो जो भी आपके साथ पढ़ रहा होगा, more or less they do have experience working, you know, somewhere outside, and they do bring some skills which you might have never even heard of. Therefore, in that case, it will put you in a disadvantage, unless and until it's a technical course, and a technical course from ETH Zurich would be a totally different thing. But usually nowadays in Switzerland, I'm hearing that it's not that easy to find a job. And finally, how different is the Swiss German language question compared to standard German? And if a student learns up to B2 level, is it easy to understand or learn Swiss German, or is it a completely different language? Well, you can start learning High German, which is the German spoken in Germany. In Switzerland, it's a language which is Swiss German, but Swiss German कोई एक language नहीं है, it's just a dialect, and a dialect depends on where you're living. And वैसे भी Switzerland में 3-4 languages हैं, national languages हैं, जैसे कि French, Italian और German, जो कि सबसे ज़्यादातर spoken language है वो है German. और जैसे कि मैंने कहा, Swiss German एक dialect है, तो it depends where you're going to stay. So Bern का dialect different है, Zurich का different है, St. Gallen का different है, Basel का different है. So you know, you cannot really learn it until and unless you're here, and then you know where you're going to stay, and then with time you will start to hear those words, and then you might be able to understand it. But there is no other way to say it. You need to start learning High German, and only after living here you may be able to speak Swiss German. Right, तो ये थे सारे question, and it was a long list, so I took my time to answer all of these questions. But yeah, more or less I think would be relevant for you as well if you're thinking of coming and studying in Switzerland. So hopefully this video really help you, and then help you to take a decision for you. In case if you have other questions, you can write me on Instagram, or you can write it on the comment section, and I'll be happy to answer any of your questions. Keep it a bit specific, because if it is too general, then you will get a general answer as well. I will see you in my next video.